तो आज को मैं डिस्कस करने वाली हूँ डेविड कॉपरफील्ड चैप्टर एंड ये हम लोगों का ब्रिज प्लस बुक है एंड मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज एंड कवर पेज ये है एंड इसी का ही चैप्टर 1 का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। सो बहुत ही फेमस है डेविड कॉपरफील्ड एंड दिस इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेन एंड फुल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ बट क्विक क्विजेस का मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्विक क्विज एंड ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट दैट माई aunt and I had held many serious discussion on the calling to which I should be devoted. Mr. Dick had regularly assisted at our discussion with meditative sage demure. Here ये जो सेकेंड एंड यहाँ पे भी फिफ्थ लाइन है तो बेसिकली ये सिर्फ अरेंजमेंट एंड दिस इज़ थर्ड वन, दिस इज़ द फोर्थ वन एंड अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे एंड इसी वीडियो में मैंने कुछ इनसाइड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज इज व्हाई डिड द नरेटर हैड अ मिक्स्ड फीलिंग व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स स्कूल। तो हम लोग आंसर के साथ सभी चीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, so the answer is the narrator had mixed feelings because he was happy at school, had a great attachment to Dr. Strong and was eminent and distinguished, but he was also excited about the prospect of being young man and making his marks on society। मतलब अपना impression जमाना चाहता था society में। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज डिड द नरेटर नर्चर अबाउट यूथ। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द narrator from quoted line? So the narrator had misty idea of being young man, seeing wonderful things and making great impact on society. And अपना impact वही same related है and this one the narrator seems reflective, uncertain, idealistic with a mix of nostalgia for his school days, excitement for the future. The narrator ये जो हम लोगों का है ये क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नरेटर्स एम्बिशन इन लाइफ, व्हाट वाज मिस्टर डिक्स पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन द नरेटर एंड हिज aunt discussed the narrator future course of action. How did the narrator's aunt react to the Mr. Dick's suggestion that the narrator should become a brazier? I mean ये मैं इंक्लूड की हूँ किस तरीके का रिएक्शन था उनके आंट का एंड थिंक एंड डिस्कस का या फिर डिस्कस कर लेंगे बट हम क्वेश्चंस को ये अभी रीड आउट क्यों तो उसका आंसर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। द नरेटर एम्बिशन इज़ नॉट clearly stated but he is trying to find a suitable career path. Mr. Dick suggested that narrator should become a brazier worker in brass. The narrator's aunt received Mr. Dick's suggestion ungraciously and did not consider it. सो थिंक एंड आंसर का बहुत ही इम्पॉर्टेंटली मैंने अच्छे तरीके से आंसर्स प्रेजेंट किया है बट उससे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं। जिन लोगों के पास बुक नहीं प्रेजेंट है उन लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन रीड आउट करें, स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं, फिर साथ में आंसर भी लिख लो आप लोग। बट मैंने अपनी कॉपी में क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स से मतलब उनको ये वर्क दूंगी एंड आंसर्स मैंने कुछ लिख दिया ताकि मुझे बहुत देर तक डिक्टेट ना करना पड़े। सो डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द एक्सपर्ट दैट यू जस्ट रीड। व्हाट डिड यू डिसलाइक एंड डिसलाइक और लाइक के बारे में बताना है स्टोरी का एंड लिस्ट 3 इंस्टेंसेस फ्रॉम एक्सपर्ट दैट फाउंड ह्यूमरस। तो हम लोगों को ह्यूमरस क्या क्या लगा था तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ द नैरेटिव स्टाइल इन एक्सर्प्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकन नोवेल David Copperfield is reflexive, introspective, with David recounting his feeling thoughts as he transitioned from school to real world. The use of first person narrative allows the reader experience David's emotion thoughts directly. Likeable aspects, immersive description, Dickens' vivid description of settings such as Golden Cross at the Care Cross, David's room with immense 4-post bedstead creates rich and atmosphere. Character insights, the narrative provide insight into David's personality, showcasing his uncertainty and eagerness to become a young man. Dislikable, जो पसंद नहीं आ सकता है, सभी चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है एंड जिस तरीक़ा से प्रेजेंट किया बहुत ज़्यादा फेमस है,
की एक मोटी मीन्स ये थिक नोवेल है बहुत ज़्यादा एंड इंटरेस्टिंग भी है। चार्ल्स डिकन के वर्क कुछ इंटरेस्टिंग है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टाइम का वो राइटर थे, तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने प्रेजेंट की अपने वर्क्स में। तो सम रीडर माइट फाइंड नेरेटिव पेस बहुत स्लो जाता है, गिवन डिटेल डिस्क्रिप्शंस एंड इंट्रोस्पेक्टिव नेचर ऑफ द प्रोटोगनिस्ट थॉट। और प्रोटोगनिस्ट का थॉट, प्रोटोगनिस्ट हीरो जो उस लोगों का जो थॉट रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी कभी कभी तभी अजीब सा थॉट्स आते हैं। द राइटिंग स्टाइल वाइल एंगेजिंग मे बी चैलेंजिंग फॉर सम रीडर टू फॉलो ड्यू टू द कॉम्प्लिसिटी ऑफ सेंटेंसेज एंड वोकैबुलरी। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये मुझे जो 3 इंपॉर्टेंट ह्यूमरस इंस्टेंसेस है। डेविड्स अटेम्प्ट टू अपीयर ओल्डर एंड स्पीक ग्रूफी टू कोचमैन, मिस्टर डीक्स सजेशन दैट द नैरेटर शुड बिकम अ ब्रेजियर, द इमेज ऑफ द नैरेटर स्लीपिंग अमंग पिलोज एनफ फॉर 6 इन लार्ज फॉर पोस्ट बेड स्टेट, किस तरीके का ह्यूमरस इन्वायरमेंट था। एंड क्विक क्वेश्चन क्या ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, तो ये क्विक क्वेश्चन का डिस्कशन क्या है तो आप लोग देख लेना क्वेश्चन। तो डिक प्रपोज क्या किया था, तो ही शुड बिकम अ ब्रेजियर, अ वर्कर इन ब्रास। ओके, डेविड्स अर्न्ड एडवाइस, क्या एडवाइस दी थी, हिम टू बी अ फर्म फेलो with a will of his own, having resolution, determination and strength of character, a firm fellow with a will of his own, having resolution and determination. David believes Agnes, यहाँ पे था एक कैरेक्टर, 2-3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर है। Agnes is a good, sweet tempered, gentle, always right. He thinks everyone who knows her concern is guided by her because of her unique nature. एंड सम इनसाइड क्वेश्चन आंसर, तो आप रीडिंग कर देती हूँ। हाउ डिड डेविड फील अबाउट लिविंग स्कूल? डेविड फेल्ट बोथ ग्लैड एंड सॉरी अबाउट लिविंग स्कूल, unsure of what future held. Why was David sorry to leave school? David was sorry to leave school because he had a great attachment to Dr. Strong and was happy at school. David's aunt decided to give him break and him a trip to Suffolk to visit Peggotty, allowing him to think and reflect on his future. How did David feel about visiting Agnes and Mr. Wickfield? David was happy to visit Agnes and Mr. Wickfield, and Agnes was glad to see him, telling him that the house had not been the same since he left. What was David's experience like when he arrived in London? David arrived in London and stayed at Golden Cross, where he was given a room a month for post bed seat. He fell asleep dreaming of ancient Rome and I want to include this also. Underline the onomatopoeic word in this sentence, and some words are there, and definition, and this is the grammar part. Simple sentence definition, compound sentence with example you can get from this book, and few identifying thing there is, and this is also something which you can use for your practice. And this question can be helpful for your practicing grammar and all, and some spelling related issues are there, something missing or something okay is there over here, but you can take from help, and yeah, like common spelling mistakes are there, you have to correct the spellings and rewrite it into your copy. So this is the answers and all, yeah, friends. So this way this video also end and this chapter also end. So yeah, if you have get any help from this video, so don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. Till then, take care and bye.